من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حامدا ومصليا أما بعد. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today my topic is the lesson in a solar or a lunar eclipse. When it happens that the sun or the moon encounters partial or total eclipse, there is a lesson for a believer that so powerful sun and so powerful moon, because of which the entire universe enjoys light, why does it happen to them that they lose their light? The lesson is that these two powerful things are also creatures of Allah subhanahu wa ta'ala, and their light is also the gift of Allah subhanahu wa ta'ala, the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala himself bestows them light, and he himself has absolute power to deprive them of the light which he bestows. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand this and believe in the absolute power of Allah subhanahu wa ta'ala. सूरज या चांद का ग्रहण होना यह अल्लाह की कुदरत की निशानी है, और इसमें यह पैगाम है कि अल्लाह तबारक व ताला ही ने इनको पैदा किया, ये अल्लाह की मखलूक हैं, ये इबादत के लायक नहीं है, और इसकी रोशनी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से है। अल्लाह तबारक व ताला जब चाहेंगे इनसे, सूरज और चाँद से, इनकी रोशनी को छीन कर इनको बेनूर बना देंगे।